to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Alia Bhatt and Ranbir Kapoor will not promote the Ayan Mukherjee film together. Arjun Kapoor calls Malaika Arora Shopaholic. Vijay Sethupathi to play villain in Shah Rukh Khan and Atlee's Jawan. Taapsee Pannu chats with Rudrani Chaturaj. Alia Bhatt and Ranbir Kapoor will not promote Brahmastra together. ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशंस के लिए बनाई खास स्ट्रैटेजी. आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी है इसका रीजन. क्या रणबीर कपूर आलिया भट्ट एक साथ नहीं करेंगे अपनी मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन? क्या रणबीर कपूर अकेले ही ब्रह्मास्त्र को प्रमोट करते आएंगे नजर? रणबीर कपूर आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म के ट्रेलर और सॉन्ग्स में आलिया भट्ट रणबीर कपूर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के बाद से ही फैंस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स के शुरू होने का वेट कर रहे हैं, ताकि रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को भी विटनेस कर सकें. दोनों को ऑफ स्क्रीन साथ देखने का क्रेज उनकी वेडिंग के बाद से ज्यादा बढ़ गया है. बट इट लुक्स लाइक रणबीर कपूर आलिया भट्ट को ऑफ स्क्रीन एक साथ देखने के लिए फैंस को थोड़ा और रुकना पड़ सकता है, और इसकी दो वजह हैं. दरअसल मेकर्स को लगता है कि अगर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक साथ फिल्म के प्रमोशंस के लिए आते हैं तो सभी का ध्यान दोनों की पर्सनल लाइफ की तरफ चला जाएगा. और फिर आलिया भट्ट ने रिसेंटली ही अपनी प्रेगनेंसी की भी अनाउंसमेंट की है. ऐसे में फिल्म ओवरशैडो हो सकती है. एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने कहा, "A lot has changed ever since Brahmastra happened. The two are not just an alleged couple that people are curious about, but an officially married celeb couple. Plus, they have a baby coming too. There are high chances that during the promotions, the film may get overshadowed by the personal aspects of RK and Alia's life. And that is not something that anybody who has worked on the film will want right now." रणबीर कपूर आलिया भट्ट के साथ प्रमोशन ना करने की दूसरी वजह आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी है. दरअसल फिल्म के प्रमोशन के लिए कास्ट और फिल्म की टीम को मल्टीपल सिटीज का टूर करना होगा, और एक्सपेक्टिंग मॉम आलिया भट्ट के लिए ऐसी हालत में ज्यादा ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा. सो इसलिए वो कुछ ही प्रमोशनल इवेंट्स में नजर आएंगी. बता दें, मेकर्स ने इस बात का भी खास ध्यान रखा है कि ब्रह्मास्त्र के प्रमोशनल इवेंट्स में फैंस और मीडिया फिल्म से ही जुड़े सवाल करें, न कि उनका फोकस रणबीर कपूर आलिया भट्ट की पर्सनल लाइफ पर हो. Brahmastra is produced by Karan Johar's Dharma Productions and also stars Nagarjun, Moni Roy and Amitabh Bachchan in key roles. ये फिल्म September 9th, 2022 को रिलीज होगी. ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रह्मास्त्र को लेकर मेकर्स की ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल होती है. अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोरा को कहा शॉपहॉलिक. अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोरा के साथ शेयर की एक न्यू पिक्चर. अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा अपने पेरिस वेकेशन को नहीं भूल पा रहे हैं. क्या फैशनिस्टा मलाइका अरोरा है एक शॉपहॉलिक? मलाइका अरोरा ने क्या अपने रीसेंट पेरिस ट्रिप पर की थी खूब सारी शॉपिंग? मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर के साथ उनका 37th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस वेकेशन पर गई थी, जहां इस कपल ने खूब एंजॉय किया. और यहां से मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर ने अपने मूवी डेट से लेकर नाइट वॉक्स और साइट सीइंग तक की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर की. लेकिन रिसेंटली ही अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा अपने पेरिस वेकेशन से लौटे हैं. दोनों को शटरबग्स ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था. ऐसे में अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा को अब पेरिस से लौटते भले ही कुछ दिन बीत चुके हैं, बट इट सीम्स लाइक बोथ मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर कांट गेट ओवर देयर पेरिस वेकेशन येट. और इस बात का प्रूफ है पेरिस वेकेशन से दोनों की ये न्यू पिक्चर, जिसे अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
इस पिक्चर में they can be seen posing together in front of a mirror. Arjun Kapoor wore a blue t-shirt teamed with black pants and a beanie. The actor was also sporting cool black goggles. Malaika Arora opted for a green blazer and shorts. Arjun Kapoor ने इसके साथ कैप्शन दिया a selfie with a shopaholic. ऐसे में अब ये सोचने वाली बात है कि क्या मलाइका अरोरा वाकई एक शॉपaholic है? वैसे इससे पहले मलाइका अरोरा ने भी अपने इस वेकेशन का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा दिस वेदर इज सो रोमांटिक #थ्रोबैक तो बनता है। वहीं बात करें अर्जुन कपूर के वर्क फ्रंट की तो अर्जुन कपूर विल नेक्स्ट फीचर इन मोहित सूरी's एक विलन 2 co-starring John Abraham, Disha Patni and Tara Sutaria. The film has been slated to hit the theaters on July 29th. He will also star in The Lady Killer with Bhumi Pednekar and Vishal Bharadwaj's कुत्ते। अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन है, लेकिन ये पहली बार है जब सोशल मीडिया पर दोनों ने अपने वेकेशन के इतने सारे वीडियोस और फोटोज पोस्ट किए हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान में कौन सा सुपरस्टार बनेगा विलन? क्या बॉलीवुड के किसी टॉप स्टार ने शाहरुख खान की फिल्म में विलन बनने के लिए कहा यस? या फिर किसी साउथ सुपरस्टार को किया जा रहा है कास्ट? शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान का फर्स्ट लुक जब से सामने आया है, शाहरुख खान के फैंस कैन नॉट कीप काम। फैंस इस फिल्म को लेकर हो गए हैं काफी क्यूरियस और अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म के विलन को फाइनल कर लिया गया है और वो विलन है साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति। जी हाँ, साउथ के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स विजय सेतुपति ने शाहरुख खान के साथ जवान में काम करने के लिए हाँ कर दिया है और बहुत जल्द मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग हो सकती है। शाहरुख खान की फिल्म के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि विजय सेतुपति की डाउन साउथ है काफी फैन फॉलोइंग और इसे शाहरुख खान की फिल्म को पैन इंडिया पॉपुलैरिटी मिलेगी। विजय सेतुपति के इस फिल्म में शामिल होने को लेकर आई इस अपडेट पर एक सोर्स का कहना है सिंस सेतुपति इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर्स इन इंडिया, डेट्स आर नाउ बीइंग वर्कड आउट। Soon he will join the film's sets in Mumbai for the shooting. An announcement will be made at the right time. यानी विजय सेतुपति के साथ शूटिंग की प्लानिंग हो चुकी है और इस बिग न्यूज को सही वक्त पर ग्रैंड वे में किया जाएगा फैंस के साथ शेयर। वैसे शाहरुख खान खुद भी विजय सेतुपति के बड़े फैन हैं और उन्होंने कुछ समय पहले विजय सेतुपति की तारीफ की थी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाहरुख खान ने कहा था I don't know how to say this and I want to compliment you. You are the most wonderful actor I have ever seen in my life. शाहरुख खान और विजय सेतुपति को साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए होगा एक सुपर डुपर एक्सपीरियंस। आपको बता दें, शाहरुख खान विजय सेतुपति स्टारर ये कमर्शियल एंटरटेनर 2 जून 2023 को रिलीज होने वाली है और मेकर्स ने इस फिल्म को तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज करने का फैसला किया है। वैसे इस फिल्म को काफी बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है। We just hope ये कमर्शियल एंटरटेनर फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरे।
It's been years she's been saying I'll walk the talk, and Taapsee Pannu is doing exactly that and taking some wonderful women along with her. Let's talk about things that she's doing, and let's welcome to our show actor, producer, and so much more, the wonderful Taapsee Pannu. Oh, what an introduction. I'm almost running the talk now. Almost running the talk. But you are. It's saying that. But what I saw with Dhak Dhak and your enthusiasm was the fact that this is my baby, and I have some of the strongest women of the industry leading it. Yeah. And did I get it right? Yes, you got it right. And it's so heartwarming every day when this was filming, and we are still like 4-5 days left for the shoot. But they have finished, like हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई, अब तो वो हालत है. Oh, what a feeling, yeah. To see every day finish कि call sheet आज पूरी हुई है. आज ये किया है. आज you to see those pictures of what is happening on set, even though I was not physically present there, it was just like a heartwarming feeling. Generally, I don't know if I felt like that after accomplishing the things that I've done as an actor also. This is a different feeling altogether. I have not explored this territory much. I'm still taking one step at a time. But this is a different feeling. I've never experienced this feeling before. सबको equal vanity दिया है ना? कि आपने सबको equal दिया है on record, on paper. You talk to all 4 of them. I'll call Diya today. Yeah, please do. Vanity room, सब कुछ. जो आपको नहीं मिला था वो आप. बस that is the whole idea. But it's true, right? I want to give a reference to it. This is not what you had got through when you started off, that's right? true. And you had said you'll change things. Yeah, at least whatever is in my capacity, I'll do it all. मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली पहली फिल्म बना रही हूँ, अगर पहली दूसरी तीसरी फिल्म के अंदर इट्स नॉट लाइक मुझे 100 करोड़ का बजट मिल जाएगा. इट्स नॉट. बट एटलीस्ट जो भी मेरे को मिलेगा आई विल डू जस्टिस टू इट. इट विल नॉट बी लाइक कि मेरी तो खैर चारों ही हीरो है मेरे फिल्म के अंदर. इट्स नॉट लाइक हीरो हीरोइन भी होते तब भी इट वुड हैव बीन इक्वल फॉर मी. When you want to play Mithali Raj, my main interesting part was I thought both of you have very similar characteristic traits, personality wise, because you keep referring to the press conference, but you have been a part of so many of those places where you have actually called out things that are wrong, and I don't think a lot of actors still do that. Did you also see when you saw that you're like, you know what, this is my girl? So I think ideologically, personality wise, we are actually very different personalities, but our ideologies, what hits us, what hurts us, what we want to stand up for, are very similar. Exactly. Yeah, so that press conference, that statement was the one that made me take notice of her, because it just suddenly resonated with me, na? Ki arey yaar, this is exactly what I've been going through, what I feel like saying, what I have mentioned before. So this is like, wow, there is another one who thinks exactly like that, and that too in a field again which is heavily dominated by men. So she has the guts to call it out. And she have to. Yeah, so it just resonated with me, and at that time I had no idea तो कि picture बनेगी इस पे कभी या फिर मेरे पास आएगी कभी. I had no idea at that point. So it was, I think in a way, universe started manifesting it from that time onwards, and then eventually you were like, wow. I was like, I wow. met my tribe like that. Yeah, I was like, wow, what a statement to make at that position. So when it came to me, I was like, there is no way I'm going to let this opportunity go out of my hands. And it came to me way early. It was before even the script was ready. It came to me when only the rights were taken, research material was there was no script. So I was lucky enough that these people reached out to me and then thought of me, kept me in mind and wrote the script. That this one is going to play. Because I think for them to be fair, they wanted someone who will give us the commitment of prepping up what it takes to be a Mithali Raj, because it's by no means an easy thing to play someone like her, to be a legend suddenly for someone who has never picked up a bat. So yeah, so it required that kind of commitment, and hence they reached out to me way too early. And to see how you sort of react to it also. To see that if I'm ready to give that much of time and effort that will be needed to learn the sport and be Mithali on screen. Okay, I know that in Dunki, and I don't know how much you can talk about it. I can't talk about it much. Yeah. But you've always said that I have been a Bollywood actress. There has to be a time where I am opposite King Khan. Yeah. And it happened. Yeah, that's a big bucket list of, I think, possibly every actress or even an actor for that matter. There's so many friends of mine I know around, some of them who have worked in the industry, who are like, you know, like हम लड़की बन जाएंगे, हमारे को काम मिले अगर उनके ऑपोजिट तो पेड़ बन जाएंगे, पेड़ पेड़ बन जाएंगे. हाँ, तो it's like that kind of obsession and love for him that everyone has, especially when you come from Delhi ना, वो एक वो दिल्ली वालों की अलग ही affinity है उनकी तरफ, and rightfully so. He has a hustler, charm. Yeah, he has the charm.
he has the impact on, he has that impact in person on people around him. So none of that is exaggerated. That is all is true. Whatever is felt and known about him, and his victory feels personal. His loss feels personal. That's how it is. He didn't have a release, and look at how people still love him. Yeah. Madness, like madness, and rightfully so. क्या बोला कि एक रील बनाया कि नहीं तापसी? I want reel शाहरुख के साथ like slow motion running. वो let me just absorb and accept the fact that this is happening. When I get comfortable with that, ना is when I tell him, sir आप वहाँ दूर से ना एक बारी भाग कर आना 40 frames. I just want to capture it. But I think we are very, very proud of you. Thank you. And this is just the beginning, and all the very best. In fact, in the sense that people keep talking about pan-India actress, and I want to say that you actually, transitioned so smoothly when you were doing a lot of South films to there, and you were actually not accepted here. Yeah. Isn't it? Yeah. It was it's smooth now that you look back at it. At that time, it was very, very bumpy, very, very difficult. I had to keep myself at home and not go and attend events because I was just not acknowledged as someone Bollywood. worth it. Because I was still seen as a struggler, a newcomer who has to start from scratch, not as someone who has done probably a dozen films, which is like double, triple times a lot of people who used to be on the front seat. So I have seen those bumpy times to now seeing all the actors of South being treated as big stars here. So it's a good, much needed change. Great. South North, I think you'll always be a star, Taapsee. Oh, thank you. Thank you so much. I love how Taapsee gets very embarrassed, but suddenly I become serious and give this compliment. Yeah, I get very embarrassed with that star. I just I'm going to keep calling you that. I feel like यही तो manifest करना पड़ेगा. हम नहीं करेंगे और हम करेंगे. बोलते रहो भगवान star बना दो, please बाबाजी star बना दो. Please बाबाजी star बना दो. You are a star and you know that. But thank you so much, Taapsee. Thank you. Always lovely chatting with you, and I feel you're going to hit it out of the park. Literally. Literally. Thank you once again. Thank you. Coming up on the show, Hrithik Roshan plays dumb charades with his crew. I am a ninja in dumb charades. Punchy, feathers, wings, fly. ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग लोकेशन हुई रिवील। क्या ऋतिक रोशन ने उत्तर प्रदेश में शूटिंग से किया था इनकार? यूएसए में अपनी टीम के साथ डम शराड्स खेलते दिखे ऋतिक रोशन। Punchy, feathers, wings. ऋतिक रोशन इन दिनों यूएसए में अपनी फिल्म फाइटर की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने फिल्म के सेट से BTS वीडियो को शेयर किया, जिसमें वो डम शराड्स खेलते दिख रहे हैं। In this video, Hrithik Roshan is seen performing goofy charades with his crew. He makes his team guess the name of 1955 Dilip Kumar starrer Uran Khatola. Khatta, khata, khat. Second half. Udan Khatola. इससे पहले भी ऋतिक रोशन ने अपनी टीम के साथ बर्गर एंड फ्राइज को एंजॉय करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसे उन्होंने टेक्स्ट दिया, "Found myself a team who loves food as much as I do. Foodies assemble. #my-team. #travel memories." वैसे ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा भी अपनी शूटिंग लोकेशन को लेकर न्यूज में है। रिपोर्टेडली ऋतिक रोशन ने उत्तर प्रदेश में फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग से इनकार कर दिया था, जिसके बाद फिल्म मेकर्स की मुश्किल बढ़ गई थी। And according to report, the budget of the film had doubled as the production team had to recreate the lanes of UP in Dubai after Hrithik Roshan didn't want to shoot the movie in the state. ऐसे में फिल्म से जुड़े प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि मेकर्स ने फिल्म के एक पोर्शन को UAE में शूट करने का फैसला कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते लार्ज स्केल प्रोडक्शन टीम की हेल्थ कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए लिया था। Production house said, "We have been noticing a lot of misleading and totally unsubstantiated reporting on Vikram Vedha shooting locations. We clearly want to state that Vikram Vedha has been shot extensively in India, including Lucknow. A portion of the film was shot in the United Arab Emirates in October-November of 2021, since it was the only location providing the infrastructure for a bio bubble
that accommodated crew of such large scale, also allowing buildings of sets in a studio during the preceding months of the shoot. We chose to do that out of health and protocol concerns. आपको बता दें कि फिल्म विक्रम वेधा में ऋतिक रोशन के साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे। Punchy. Feathers. Wings. Fly.